Hello everyone, ladies and gentlemen, boys and girls, and children of all ages. This is me, Mr. Malbhatia, on Crypto Billionaire with Maddie. And now you know, yeah, this is my first video on Crypto Billionaire with Maddie. And hello all of you, hi everyone. From today onwards, we're gonna learn what is cryptocurrency. आप सबने पहली बात हम दो लैंग्वेज में बात करेंगे. We're gonna talk in two languages, English, Hindi plus English, man. We Indians, we need to help Indians best. So it's gonna be English language. Hope it goes for you all. Yes. So you all might have heard of what cryptocurrency, NFT. It's not how so much trend is going on. Crypto bill is coming, cryptocurrency, NFT. Amitabh Bachchan sold NFT for these many crores. Now Salman Khan is making, Sunil Gavaskar is making NFT. Cryptocurrency, Dogecoin, Bitcoin लिया क्या? Educate Bit. What the hell is this all going on? Many of you are still confused कि क्या है भाई, what is this, हो क्या रहा है cryptocurrency, क्या है cryptocurrency. तो me over here gonna make your life easy. I'll tell you everything, and one query you are having, you can DM me on Instagram. I'll be there to help you all the time. You can DM me on Instagram. I'll write my username in the description @IAM Madhav Bhatia. Just search me over there, you'll get my name over there. So yeah, I'm doing podcast from long time on Crypto Billionaire, but now I thought of doing YouTube too, because many people do search on YouTube. So आज हम आपके सारी क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि NFT क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, फ़र्क क्या है. कोई कहता है NFT लिया, कोई कहता है क्रिप्टो लिया मैंने, पर क्या है सभी है, क्या चल क्या रहा है. First video is today I'm going to tell you is what is NFT. Our first topic is what is NFT. Before starting off, I'll tell you the full form of NFT. Full form of NFT full form है Non Fungible Token. Non Fungible Token. Did you get that? Non Fungible Token is a type of record. फर्स्ट ऑफ ऑल दो लैंग्वेज में बात करेंगे, एक समझाऊंगा, एक टेक्निकल भाषा में, तो वन हु नो टेक्निकल टर्म्स, एंड सेकंड वो देसी भाषा. ठीक है, फर्स्ट टेक्निकल बात करें. इट्स एन टाइप ऑफ record stored on blockchain technology that certifies that a particular asset is unique and you have the ownership of that. ये भी टेक्निकल में भी बहुत मीन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज है जो यू कैन अंडरस्टैंड. थोड़े बहुत टर्म टेक्निकल है बट यू कैन अंडरस्टैंड. देसी भाषा में भी समझाएंगे. दिस एसेट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट, वीडियो, ऑडियो, एसेट्रा एसेट्रा. द टैलेंट यू हैव, it's an asset. It can be also in the form of physical asset, physical art you have it in your homes, drawings you make, anything it can be. It just has to be your asset. NFT provides you an ownership of unique identity of some asset to you. अब देसी भाषा में बात करें तो नॉन फंजिबल टोकन, NFT एक नॉन फंजिबल टोकन है. वो एक चीज़ जो आपकी है, भले वो वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, म्यूजिक के फॉर्म में, किसी भी तरह के आर्ट के फॉर्म में हो, इट्स योर्स एंड यू कैन सेल इट. यू अंडरस्टैंड. और इजी भाषा में आते हैं. नॉन फंजिबल टोकन से समझने से पहले फंजिबल समझते क्या होता है. फंजिबल का बेस्ट एग्जांपल है मनी. आपके पास 100 नोट है एक चीज़ के, ठीक है, 100 रुपये के 100 नोट है, या फिर इंग्लिश टर्म $100 के 100 नोट. इफ यू हैव 100 नोट्स, ईच नोट कैरीज द वैल्यू ऑफ $100. इट डजंट दैट कि सबसे ऊपर वाला, इट डजंट वेरी. द टॉप नोट इज ऑफ $100, द सेकेंड वाले की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर इफ $100 printed on it, it means $100. That's it. Whether it's the last printed note or the first printed note, whether it's kept up, kept down, it's crumbled, then crumbled, that note is crumbled, but the value of the note remains $100. Or in rupees, if you have 100 rupees note, it's 100 rupees. So it doesn't matter whether you have the first note, you have the second note printed, your third note, or the last note, yesterday note printed. मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 साल पुराना 100 का नोट हो. अगर वो आज भी नोट वैलिड चलते हैं, जिसने कल का प्रिंटेड नोट इसके हाथ में है और जिसका 10 साल पुराना प्रिंटेड नोट हाथ में, दोनों की वैल्यू $100 है. इफ़ दे आर स्टिल वैलिड. मतलब अगर वो कलर वाला जो गवर्नमेंट रखी है, अगर वो वैलिड है अब आज भी, तो उसकी वैल्यू भी $100 ही मानी जाएगी, 90 नहीं हो जाएगी 10 साल बाद. यू अंडरस्टैंड दैट. और जो कल प्रिंट हुआ नोट उसकी भी $100 ही होगी. अब आते हैं हम नॉन फंजिबल. नॉन फंजिबल इट रियली वेरीज. फंजिबल में यू कैन इवन टेक एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन. बिटकॉइन इज इवन ऑल्सो इट्स ऑल फंजिबल. जो सबसे पहला बिटकॉइन माइन हुआ था, सबसे पहले जो निकला था, और जो कल परसों माइन हुआ है, एक मेरे पास है और फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास है. मेरे पास 10 साल पुराना बिटकॉइन है जो माइन हो गया था, आपके पास कल वाला माइन हो गया, आपने खरीदा है.
दोनों की वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है. इट डजेंट मैटर, मतलब फंजिबल डजेंट मैटर कि वेदर इट्स अ लेटेस्ट वन और समथिंग. अगर वो बिटकॉइन है इट मीन्स द वैल्यू इज सेम, दैट्स इट. फंजिबल का मतलब क्लियर आ गया. बट नॉन फंजिबल मीन्स देयर इज ओनली वन थिंग एंड यू आर द ओनर. यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग. क्रिप्टो पंक्स, क्रिप्टो क्रिटीज आर्ट्स एक आर्ट है जो आपने बनाया. इट्स योर आर्ट ओनली एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट आर्ट. And you can own the first created art is yours and that's the ownership. Second कोई same बना लेगा, it's not allowed. You have the ownership of that. You understand that? You have that ownership. It's only one thing, unique thing, and you are the owner of that. It's your audio, your video, your asset, your video, anything. कुछ भी है, कोई art है कुछ. It's only one unique and you are the owner of that. And that differentiates something. Second कोई उसका बना लेगा, it's not applicable. Owner remains you and you even get royalties. For example, आपने मेरा कुछ खरीदा. Now you are the owner and you sell forward. I too get some royalty because I was the first owner. It was my original art. Don't remember that. Don't forget that. You understand that? I hope बहुत क्लियर हो गया होगा आपका NFT. बहुत तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो हो गया होगा क्लियर. I tried my best to clear you. मैंने बहुत कोशिश की आपको क्लियर करने के लिए. We'll be going forward in this. पहले हम थोड़ा NFT का प्लेलिस्ट थोड़ा करते हैं. You get to know how NFT goes. How next video I'll tell you how to create NFT, how to buy NFT, and how to sell your NFT, and all of these things. But again, these things we'll cover next videos. So till then, start following Crypto Billionaire with Maddie, and I'll help you all the time. Just follow me on Instagram, subscribe me on YouTube, keep sharing, keep liking. Because in this crypto world, you need to know so much of knowledge. You need to get so much of knowledge. It's so vast. So I'll be there with you to help you all the time. Let's be successful together. See you soon. Till then, subscribe. Follow me on Instagram @IAM Madhav Bhatia. I'll see you soon. Bye bye. Till then, keep stay tuned to Crypto Billionaire with Maddie.